come in? Yes, please come. Good morning. Good morning, sir. Have your seat, please. Tell us something about yourself. My name is Ashish Kumar. I belong to Deoghar, Jharkhand. I have completed my Bachelor of Arts from AS College Deoghar in Economics. My father is a businessman, my mother is a homemaker. Why do you want to join bank? The first thing that I have done my graduation in economics, and bank seems familiar to me in its relevance. Second thing, 3 to 4% in my family are in bank, and they have advised me. And also in bank there is a lot of prestige. It is a job of prestige as well as honor. You are graduate in economics. Then in what way economics will help you in your job? Most of the banking terms are present in economics as well as relevant. By opting for economics in my graduation, I have studied many things and many components of the core banking system that will help me in my job. What is base rate? Base rate is the rate below which banks cannot pass the advances. It is determined by the banking committee or the bank loan department. Is base rate and bank rate same? No. And what Bank is the rate is the rate at which the central bank of a country lends advances to the centralized bank of the country, whereas base rate is the lowest rate below which advances cannot made access except in some cases. In recent times, Donald Trump had imposed a heavy rate of tariffs on Indian imports. Yes, sir. What steps have been taken by the RBI to curb the problems raised due to this higher tariff? RBI has opted for cheap monetary policy. It has loosened the bank rate and repo rate by 25 BPS as well as 0.25%. That will increase the liquidity in the market and will help absorb the shocks of the tariff. Second thing is done is India has started exporting to different countries. And the third thing that is done is government has started providing subsidies to tackle tariffs. Okay, Ashish, just to loosen you up, tell me your hobbies Photography, and why photography? because it is something innate in me. Whenever I go to somewhat lonelier place such as mountains, or whenever I visit some family picnic or anything, just beautiful scenery, I used to capture it in my phone. Sometimes I like photographing rails. I visit stations at different times and I do clip. Okay, tell me something about your strengths and weaknesses. I do complete the work in the given time. That is my biggest strength. Mhm. I am able to take harsh decisions at tough times. Mhm. I am very rational and pragmatic when it comes to my job or my work. Your weaknesses? Weakness, sometimes it takes me tough time to convince myself after a setback or deal with negative thoughts. But with experience, I'm trying to do better. What do you do to overcome your weaknesses? I work, I study books based on those topics. I consult seniors, my family. Sure. The central government has laid emphasis on cashless society. Yes. Do you think cashless transactions are good or bad
for the society at large? There are both pros and cons. Cashless society means less of fake currency, easier mode of transaction, time saving of resources. Government has an ease in locating. Cashless society means for every transaction there is a record created, less black money, less corruption. Many of the government departments have started direct. Some cons are frauds have increased. Multiple failure of transactions can occur. Sometimes lags in system can make problem. आए दिन फ्रॉड्स के बारे में जो 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 फाइनेंशियल फ्रॉड्स है इसकी घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। सरकार ने कोई ऐसा स्टेप उठाया है जिससे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोका जा सके? जी, क्या? आरबीआई हमेशा आपको इन्फॉर्म करते रहती है, बैंक्स को वो इन्फॉर्म करती है। बैंक्स आपको बहुत सारे मैसेज भेजते हैं कि आप अपना ओटीपी, अपना सीवीवी, अपना अलग अलग डिटेल्स, अकाउंट नंबर, केवाईसी, किसी अननोन वीडियो कॉल नहीं उठाए, किसी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करे। साथ ही साथ आरबीआई हर हमेशा गाइडलाइंस जारी करती है नए फ्रॉड्स को स्टडी करके उसके खिलाफ कमेटी बना के। FATF सुना है टर्म? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है ये? एक ग्रुप है देशों का जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और बहुत तरह के अलग अलग कार्टेल एक्टिविटीज जो होती है, जो कि देशों के खिलाफ गलत काम होता है, उसको टैकल करने के लिए बनाया गया है। Ashish, have you watched Money Heist? No. It's a very popular web series. Yes, I've available on heard about it. Netflix. Okay, so in case you haven't heard about it, I would suggest in free time you must watch the given web series. My point was asking that recently in Bangalore you must have heard about the heist that took place. With that background, Yes. people are losing confidence in ATM related activities, right? Failure of multiple transactions, as you already witnessed Yes. or said. So suppose that a customer comes to your bank, okay, and you are posted as a probation officer over there. So what measures would you take to boost public confidence in ATM related activities or banking as such? I will tell to the customer that frauds are not a new thing. With every new advent in the technology, new frauds come, but there are security teams, there are teams with new AI models that can read and monitor activity. We have made everything to safeguard our customers' interest, because bank always ensures the optimum security, because money is something that is very critical and bank is very responsible institution. Have you heard about GDP? Yes. And what is the size of Indian economy right now? It's above 5 trillion. Aisha? No. Okay. Tell me the difference between WPI and CPI. WPI is wholesale price index that is calculated from the producer side or at the retail, at the wholesale scale, where the production takes place, and after production it indulges all the raw cost and other things. Whereas consumer price index is calculated on the prices that an individual consumer has to pay. So, do you have any idea who releases or what institution Yes, releases? Ministry of Commerce and Industry releases WPI, as well as CPI is released by NSO, National Statistical Organization. Are you sure about WPI? Yes. Okay. तो बैंक का इंश्योरेंस सुना है क्या? बैंक का इंश्योरेंस? Yes, I have heard, but currently I am unable to recall. Bank insurance. तो मान लें कि आपको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कुछ दिन जॉब करने के बाद एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, आप इस जॉब को कंटिन्यू करेंगे या क्विट करेंगे? जॉब, मेरा तो सबसे पहले जॉब करने का
ग्रोथ ही प्रोस्पेक्ट होता है, लेकिन मैं उस समय देखूंगा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कि बैंक के प्रति क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिचुएशन। यदि सिचुएशन अगर उस तरह का रहा तो क्विट करेंगे तो मुझे अभी ही छोड़ देना चाहिए आपको? नहीं, फ्यूचर सिचुएशन को कैसे अभी के समय बताया जा सकता है। आरआरबी के बारे में आपने सुना होगा, रीजनल रूरल बैंक। अनेक बैंक ऑपरेशनल थे फिर भी आरआरबी को सेटअप किया गया, इसके रीजन क्या थे? प्रायोरिटी सेक्टर जो है हमारा है इंडियन इकोनॉमिक एग्रीकल्चर, उस पर फोकस करना। बहुत सारे बैंक होने के बावजूद भी वो बैंक्स में किसानों को, छोटे छोटे व्यापारियों को लोन लेना, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, क्योंकि आज भी भारत में कृषि जो है आज भी पिछड़ा हुआ है। तो एक वैसा बैंक इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसका कि स्पेशल फोकस हो उस पर, वहाँ जाने पे ऐसा नहीं लगे कि बहुत ऊपर का, बहुत हम बिजनेस ओरिएंटेड हो, तो इसीलिए ग्रामीण बैंक का व्यू रखा गया। अच्छा, तो ये दूसरे बैंकों से डिफरेंट कैसे आरआरबी? आरआरबी दूसरे बैंकों से डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये जो है सबसे पहले आरआरबी का एक स्पॉन्सर बैंक होता है। उसके बाद इसका फोकस होता है ग्रामीण बैंक पे, इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र पे इसका फोकस होता है। बहुत तरह का लोन होता है जो आपको जनरल बैंक नहीं देगी, मछली पालने का, मधुमक्खी पालने का, फार्म खोलने का, लेकिन ये बैंक देगी बहुत छोटे छोटे अमाउंट में। ये बैंक देगी, जरूरी नहीं है कि जितना भी पीएसबी या प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसका किसान क्रेडिट कार्ड हो, लेकिन इस बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं किसान लोग के लिए छोटा, वो यहाँ पे ज़्यादा आसानी से मिलेगी। सिबिल स्कोर क्या होता है? सिविल स्कोर होता है आपका जो लोन, मतलब कोई भी आदमी या इंस्टीट्यूशन का जो लोन लेके उसको लौटाने का, या उसमें कितना फॉर्मल आप रहे हैं आपका। गुड सिविल स्कोर और बैड सिविल स्कोर कुछ पता है आपको? जी, गुड्स न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं है, लेकिन गुड सिविल स्कोर का मतलब होता है कि आपने जो भी लोन लिया उसको समय पे आपने दे दिया। बजाय बैड सिविल स्कोर तब होता है जब आपका इंस्टॉलमेंट रुक जाए या आपने ईएमआई पे नहीं किया। What is the function of IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हैज a lot of functions. First off, it gives backup to many countries which run out of currency or resources. Second, it has SDF reserves, though which countries can deposit and withdraw reserve from it. Can you spot the differences how IMF, the way it functions, is different from the World Bank? Many of the projects that are carried out in the States is, sponsored by World Bank. IMF generally gives long-term loans, very long-term, as well as it does not finances every activity. It gives bailout packages, whereas World Bank gives short-term loans. Then there. Short, can you tell me the difference between long-term loan and short-term? I mean 10 years, 14 years, or 15 years for World Bank and 20, 40 years for IMF. Where is headquarters of World Bank located? United States. And who is the current CEO of World Bank? Ajay Banga. Okay. What is unsecured loan? An unsecured loan is the loan against which there is no collateral taken. Okay. So, how would you deal with the rising NPAs in your? I will look over the guidelines given by RRB, take risk into account when giving loans. First focus all my priorities on those NPAs, and will stop issuing new loans over much more risks. अच्छा, ये बताइए कि जो इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ रहे हैं उसके कारण क्या है?
करेंसी का बढ़ना, लोगों के हाथ में मनी का बढ़ना, बहुत बार प्रोडक्शन की कमी हो जाना, पॉपुलेशन का बढ़ना जिससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, साथ ही साथ ऑयल वगैरह के प्राइस बढ़ना, जो इंटरनेशनल ऑयल शॉक्स आते हैं जिसके कारण प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है। कल्पना करें कि आरबीआई न्यूमरस अमाउंट में करेंसी नोट प्रिंट कर दे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इकोनॉमी? There will be hyperinflation. If currency is printed in unlimited amounts, the prices will rise beyond the level which RBI or any central bank can control. It will just, the markets will just crash. You will have to pay millions of rupees for a kilo of grain. अगर $1 का वैल्यू इक्वलेंट टू ₹1 का हो जाए तो फिर इंडिया की इकोनॉमी का सीन क्या चेंज करेगा? इंडिया का एक्सपोर्ट एकदम घट जाएगा यूएस से, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि उन लोगों के लिए यह एक्सपोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा। लेकिन इंडिया को इंपोर्ट्स बहुत सस्ता पड़ेगा। आज जो $100 का चीज़ के लिए आपको 932 रुपया दे 9,320 रुपया देना पड़ रहा है, उसके लिए आपको 100 ही रुपया देना पड़ेगा। तो इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने लगेगा। तो ये जो रुपीज का वैल्यू है कंपैरिजन टू डॉलर गिर क्यों रहा है? क्योंकि हम लोग यूएस को ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग अपना करेंसी को भी आरबीआई चीप करते जाता है, ताकि उन लोगों के लिए, यूएस के मार्केट के लिए इंडियन गुड्स सस्ता होते जाए और वो फॉरेन कंपटीशन या इंटरनेशनल कंपटीशन में चाइना और जापान सबको बीट कर सके। अच्छा, इज रूपी डिप्रिसिएशन गुड और बैड फॉर इकोनॉमी? Very high depreciation can be damaging. It will denigrate the respect of rupee. People will not believe. Sometimes if you pay to Iran or any other currency, they will say, look, a year ago your rupee was equivalent to 80 rupees a dollar and now it's 90, and in the coming 10 years it will be 200 rupees a dollar. So people will stop believing in our currency. Even our own people will stop saving in terms of rupee because their net value will be lost in terms of goods and services. Have you heard about Gini coefficient? Yes. What is this? Gini coefficient is based on the equitable distribution of resources. It varies from 0 to 1. A score of 0 means perfect equality. Everybody has the same amount of goods. Whereas a score of 1 means absolute inequality. Some people have everything and other people have 0. India scores 0.25, whereas highest score is for South Africa, 0.6. सपोज कीजिए कि किसी कस्टमर ने लोन लिया, कोलेट्रल दिया, बाद में उसने रीपेमेंट नहीं किया, तो क्या बैंक उसके कोलेट्रल को फोर्सिबली सेल कर सकता है? बैंक के पास ये राइट है कि एक बार वो एनपीए डिक्लेयर हो जाने के बाद लिमिटेड टाइम के बाद वो उस एसेट को सेल करके वापस से अपना जो लिक्विडिटी है उसको गेन करे। और कस्टमर जो है क्या कोर्ट में जा सकता है फॉर दिस एक्शन ऑफ बैंक? नहीं, वो तो लोन का एग्रीमेंट साइन करते समय ही ये लिखा हुआ उसमें रहता है, तो कोर्ट जाने से कुछ होगा नहीं। मॉर्गेज क्या होता है, सुना है आपने मॉर्गेज? गिरवी रहती है। अच्छा, और हाइपोथेकेशन? टर्म सुना है लेकिन रिकॉल करने में दिक्कत है। Sure. Okay. Who is the current Finance Secretary of India? I cannot recall this. Okay, not right. Who is the current Finance Minister of India? Sri Nirmala Sitharaman. Nirmala Sitharaman. How would you rate Srimati Nirmala Sitharaman as the Minister of Finance? Out of how many numbers? 10. Just rate her performance. 7 out of 10. And why so?
Because of the current instabilities in the economy. What are the current instabilities of the economy according to you? Current the monetary policy recently has shown how much exports and imports have been done. Many industries have been shut down. Government is unable to support many of the schemes which it has announced, as well as the many of the economic indicators of the economy have been depreciated over the time. Okay. Have you heard about deposit linked insurance scheme? Yes, What is it? deposit linked insurance scheme is an insurance over the deposits in banks. It is covered by DIGCI. And what is the current ceiling slab for it? 5 lakh rupees. Do you remember it has been revised recently? No. Okay. What is the minimum balance that RBI has announced? It has the current customers have to maintain in their given accounts, like for savings or current. It has been revised very recently. Sorry, ma'am, I am unaware of it. Okay, no problem. तो लास्ट क्वेश्चन इसका रख रहे हैं कि व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द बैंकिंग सेक्टर इज फेसिंग नाउ. The biggest problem that banking sector is facing now currently is frauds or cheating with banks. Anything else? No. Okay, thank you, Assis, Thank you, for sir. today's session.